2%, नॉर्मलाइज्ड पैट जो वहाँ पर एक ग्रोथ देख रहे ओवर 6x। सर कितना मार्जिन एक्सपेंशन स्ट्रक्चरल है वो समझना चाहेंगे, और कितना जो है ड्रिवन बाय प्राइसिंग, रॉ मटेरियल पास थ्रू और फॉरेक्स गेन्स वो समझना चाहेंगे आपसे। इसमें थैंक यू फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। जो भी ग्रोथ अभी आप देख रहे हैं, इट्स वेरी स्ट्रक्चरल हियर, because whatever capex जो हमने किया है over last so many years, that is yielding results for us, and whatever EBITDA margins we are getting now is driven by price earning also, as well as our better relation of pass through of our raw material and other costs to the consumers. So we are able to pass on better cost to the consumers, as well as we getting a better price for our product in the market. So it's going to continue. ये बिल्कुल regular रहेगा, and momentum जो हमने अभी gain किया है first quarter में, this momentum will continue for FY27 and hopefully FY28 also. साथ ही अरुण सर वॉल्यूम्स और वैल्यू के फ्रंट पर जानना चाहेंगे। रेवेन्यू एक ग्रोथ यहाँ पर देख रहे हैं 37.6% ऑन वाई बेसिस, बट ओवरऑल सेल्स वॉल्यूम की बात करें जो कि है ओनली 1.7% अप। सर कितना कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए इस गैप को, और क्या हम देख रहे हैं फंडामेंटल इंप्रूवमेंट इन प्राइसिंग और प्रोडक्ट मिक्स? Fundamental improvement in product mix is certainly there. But only product which has not grown in volume is aseptic business, which was impacted because of cheaper import from Indonesia. Otherwise, all our products have gained the volume in a big way. And pricing also, we are getting a better pricing now because of our resilient supply chain. And we are able to supply to the consumers depending on their requirement. So they are seeing a consistent supply from integrated player like UFlex. And UFlex उनकी demand पूरी meet कर रहा है despite this geopolitical situation, what is there in the market now. So we are getting a better orders, better relation, and consistent supply is helping us to attain these higher margins. जी, तो सर मार्जिन्स अगर देखें जो कंपनी ने यहाँ से रिपोर्ट किए हैं, हाईएस्ट एबिटा लेवल इन 21 क्वार्टर्स, सर क्या कंपनी ये सस्टेन एबिटा मार्जिन्स जो है अराउंड 16 to 17% थ्रू FY27 मेंटेन कर पाएंगे, या फिर एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं सम नॉर्मलाइजेशन फ्रॉम Q1 लेवल्स? गाइडेंस देना थोड़ा डिफिकल्ट होता है एट दिस जंक्शन, बट लेट मी टेक यू थ्रू द बेसिक प्रोसेस. Our top line growth will be more than 30%. That is what is going to be there. EBITDA margin, what we achieved in Q1, will sustain in Q2 also. But what we are expecting on what guidance we are giving to the market for full FY27 is that we'll be around 14.5%. That is a base what we are looking at. But if the market remains strong like it has been strong for first quarter and the last quarter last year also, then these margins can improve a little bit. So अभी जो growth momentum हमने हासिल किया है वो continue रहेगा, and we'll strive hard to meet the consumer demand at a higher price also. And irrespective of geopolitical situation जो अभी चल रही है market में, we are meeting the customer requirements. That's why customers are placing more and more orders with us. हमारा capacity utilization at all plants overseas सब बढ़ा है, and main profitability is coming from overseas plants because that is where we have strategic plant located in Egypt, in Poland, Hungary, US, Mexico. They are giving very good results to us, and that is going to continue in FY27, FY28 also. So margins will be very strong in FY27, continued in FY28 also. अरुण सर यहाँ से पैकेजिंग फिल्म्स की अगर बात करें तो एक वॉल्यूम ग्रोथ तो 1.7% देख रहे हैं YOY, बट बिजनेस में एक स्ट्रॉन्ग सिक्वेंशियल ग्रोथ देख रहे हैं इन इंडिया एंड MEA, दैट्स मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। कहाँ से स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड रिकवरी आप देख रहे हैं, और कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं मीनिंगफुल ग्लोबल वॉल्यूम रिकवरी? रिकवरी वॉल्यूम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है ना, बिकॉज आवर प्लांट्स आर having a good capacity utilization as of now. Most of the plants are operating at 60% plus capacity. And going forward, they'll also attain a capacity near to 80%. So all the plants like Egypt plant, Nigeria plant, Poland and Hungary plant, they're achieving better and better capacity utilization. Capacity increases, our margin will also increase because fixed cost is better consumed there. We are expecting all the plants to deliver, and a strong performance will come in FY27 as well as in FY28 going forward.
और सर एक प्रेजेंटेशन जो मैं कंपनी का देख रही थी उसमें इंडिया अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बताया गया है, जो हाईलाइट किया है कंपनी ने, इंप्रूविंग डोमेस्टिक डिमांड एंड लोअर इंपोर्ट्स। तो क्या सर इंडिया यहाँ से आप देख रहे सिग्निफिकेंटली लार्जर ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइवर फॉर यूफ्लेक्स ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years? Yeah, 3 years the growth will be quite significant going forward because जो capex हुए हैं world over plus in India में जो capex किए हैं, those capacity utilizations are getting to a fuller range now. And the moment the capacity crosses 60 to 70% of the utilization level, the margins improve significantly because we are able to consume our fixed cost in a better way there. So FY27 will be very strong for UFlex. FY28 will continue to be strong and FY29 also will be very strong for UFlex. ओके सर, कैपेक्स और बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स की अगर बात करें कंपनी के लिए, सेवरल न्यू कैपेसिटीज़ जो हमने देखी है जिसमें से कुछ कमीशन हुई है या फिर रैंपिंग अप हम जो देख रहे हैं, नोएडा रिसाइकलिंग हो गया, मैक्सिको WPP बैग्स, इजिप्ट एस्थेटिक फैसिलिटी जो हम देख रहे हैं। तो सर रेवेन्यू और एबिटा कंट्रीब्यूशन ये प्रोजेक्ट से कलेक्टिवली कब तक FY27 में हम डिलीवर होता देख पाएंगे? WPP is already commissioned. Okay. Will deliver a good capacity around 30% in this year. Our recycle plant is already commissioned. They are delivering good capacity utilization. Aseptic should be commissioned in late H1, and that also capacity will come up for revenue circulation there. We are seeing in FY27 some growth will come from these capacities, but FY28 will be full capacity utilization from all these facilities what we set up. That will give us a good momentum in our growth, what we are achieving as of now. Right, sir. So, sir, current utilization levels of the new commission facilities, कैसे देख रहे हैं और by when do you expect these assets to reach optimal utilization? Yeah, any new capacity coming up, first year utilization is about 20 to 30%. Second year will be 50 to 60%, and third year will be around 100%. First year, any capacity will give us 30% utilization. Second year will be around 50 to 60%, and third year will be around 100%. This is how the momentum will continue, and you see the numbers wrapping up in this fashion for the new capacity which are coming up this year and next year also. जी अरुण सर, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर किया और नंबर स्ट्रीट काफ़ी अच्छा रिएक्शन भी स्टॉक स्पेसिफिक दे रहा है, बट थैंक यू सर ये डिटेल्स और नंबर्स के ऊपर आपके व्यूज शेयर करने के लिए। बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू सो मच।